हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। मैं अभी बर्लिन टीवी टावर के सामने खड़ा हूँ। रात का समय है। दिस टावर इज मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क इन बर्लिन। मैं कुछ खासियत बताता हूँ इस टीवी टावर के बारे में। इट वॉज डिजाइन एंड बिल्ट बाय हरमन एंड हिज टीम और पब्लिक के लिए ओपन किया गया था 1969 में। इसका जो लोकेशन है नियर अलेक्जेंडर प्लाज एंड इन द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मीटे। इसकी जो हाइट है 368 मीटर है। दिस टावर वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1965 एंड 1969। जो गवर्नमेंट थी वहां की, ईस्ट जर्मनी गवर्नमेंट, उन्होंने बनाया था। It was designed to symbolize the power of the socialist regime and to demonstrate the capabilities of the GDR. इस टावर में एक ऑब्जर्वेशन डेक है जहां से आप व्यू कर सकते हो बर्लिन को। एक रेस्टोरेंट है जो कि घूमते रहता है। इसकी हाइट लगभग 203 मीटर है जमीन से। It takes almost 30 minutes to complete one round. प्लीज आइए और इसका रेस्टोरेंट का मजा लीजिए। In this area, there is one more building. This is Red Town Hall in English. In German, we call it Rathaus. इस बिल्डिंग में गवर्निंग मेयर बैठते हैं, सेनेट ऑफ बर्लिन बैठते हैं। Its nickname comes from the red bricks because it is made of red bricks. This was built between 1861 and 1869. वर्ल्ड वॉर के समय में बहुत डैमेज हुआ था, बट इट वाज अगेन रीबिल्ट। बर्लिन में एक और हिस्टोरिक एंड प्रोमिनेंट लैंडमार्क है जिसका नाम है नेपच्यून फाउंटेन। इन जर्मन वी कॉल इट नेपच्यून ब्रूनेन। इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। दिस फाउंटेन इज situated in the Mitte district of Berlin, very close to Alexander Platz and Red Town Hall. It was designed by Reinhold Begas, a notable German sculptor. It was constructed between 1891 and 1895. 4-5 साल लग गए थे इसे बनाने में। The central figure of the fountain is Neptune, the Roman god of the sea, who is depicted with his trident. उसके चारों तरफ surrounded Neptune are 4 women representing the 4 main rivers of Prussia at that time. They are Elbe, Rhine, Vistula, and Oder. The basin of the fountain is adorned with various sea creatures and motifs symbolizing marine life and importance of water. Fountain was a gift from the city of Berlin to Emperor Wilhelm II. Fountain suffered damage during World War II but was restored in the 1960s. Today, the Neptune Fountain is a beloved historical monument. अभी जहाँ खड़े हैं उस एरिया को बोलते हैं म्यूजियम आइलैंड। इन जर्मन वी कॉल इट म्यूजियम इंसेल। This is a renowned cultural and historical complex located in the heart of the city. It is situated on the northern half of an island in the Spree River. यहाँ टोटल 5 वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है।
इसमें पहला है अल्टीज म्यूजियम, दूसरा न्यूज म्यूजियम, तीसरा अल्टे नेशनल गैलरी, फोर्थ इज गोडे म्यूजियम, फिफ्थ इज परगमन म्यूजियम. This area is not only significant for its collection but also for its architectural and historical value, representing different periods and styles. Area is a testament to Berlin's rich cultural heritage and its role as a major European center of art and history. दोस्तों, अगर आना हो तो इस एरिया में जरूर आइए. अगर बर्लिन आ रहे हैं तो घूम के जाइए. Hi friend, can you come this side here? Yeah. We are on the last leg of our tour, Berlin tour. Okay friends, now we almost covered west, correct? Now we're going to cover the remaining part of the Berlin east part, and all along the way we will reach airport and we'll go back to Zurich. So at this place right now, something special is here. There's so many museums are there, and then you can take the city tour here, correct? What else are here? You see something different here? See here? Yeah. This part, yeah. What we saw, you saw, see, right? So many full of museums in this area, correct? So many museums are there. So this is one of the best part attraction. People are coming here and then enjoying those museums. And Kruger, yes, one of the get the city tour. What do you want to say? Come on. Huh? Museum Island. Yes, see. Yeah, some sites are declared by UNESCO, heritage sites. So that is taken care by the people. We have extra care we need. So how the tour you feel it? The last 2 days was full of challenges, full of amazing places are there, and the views. So this is the last, and then again we will plan for the next tour somewhere. We'll go to some Venice or some area where we have not gone through. So thank you guys. See you. Bye bye. Wenn wir überlegen, dann lasst uns die Jahre erzählen und unsere Geschichte vor die Augen der ganzen Welt bringen. Dazwischen haben wir unsere Rituale. Und wenn wir sterben und den dunklen Mond sprechen, auch für Menschen, die von Reisen, Liebe und Leben und anderen Gegenständen ihre Überwinden
हम लोग वॉक करके ईस्ट साइड गैलरी पहुंच चुके हैं, चूंकि ईस्ट साइड में है और जो वॉल का रिमेनिंग पार्ट था इस साइड में जो बच गया था उसको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया ईस्ट साइड गैलरी. सो इट इज बेसिकली ओपन एयर गैलरी that features a series of murals painted directly on a remaining section of the Berlin Wall. It is one of the longest surviving segments of the wall and one of the significant cultural and historical landmarks. The East Side Gallery is located along the River Spree. It stretches for 1.3 kilometers, almost 0.8 miles. Making it the longest continuous section of the Berlin Wall in existence. The gallery was established in 1990, shortly after the fall of the Berlin Wall. It was conceived as a way to commemorate the peaceful revolution that led to the reunification of Germany and to celebrate freedom and unity. The gallery features over 100 paintings by artists from around the world. These murals cover a range of themes, including political messages, expressions of hope and freedom, and reflections on the division and reunification of Germany. Notable works include Dmitry Bruegel's My God Help Me to Survive This Deadly Love. This is also known as the Fraternal Kiss, which depicts a famous kiss between Soviet leader Leonid Brezhnev and East German leader Erich Honecker. हेलो फ्रेंड, हमारा बर्लिन टूर यहीं पे ख़त्म होता है. नाउ वी आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन से हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे जहाँ से हमारी फ्लाइट है जुरिक के लिए. वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें.